So today's topic is the problem in measurement. What kind of problem we face in measurement, you can say, uh, in behavioral sciences. Basically, we are talking about psychological sciences, like in psychology, what kind of problem we face. So few of them we have already discussed, and other we will discuss now, right? So so measurement in behavioral sciences can present several challenges and problems. What kind of challenges we can face? Anybody want to say something? Unpredictable behavior. Okay. Anyone else? Srijit, Amit? Yes, sir. Anything like what kind of problem we can face in when we are studying psychology? Well, doing research in psychology, basically. Mood, affect. No, I'm not talking about those things. Like we are talking about research method. So yesterday we talked about how like we do research, how we select problem, how we measure that thing. That is what you can say is research Cross-sectional methodology. research and longitudinal research. So these are the different types of research. So what in research, when we are measuring because if you want to study something, as we discussed yesterday, we have to measure, because suppose you want to study intelligence, you have to measure it, right? If you want to study attitude, you have to measure it, right? So you have to find out what kind of problem you can face, because as we discussed in psychology, it is not like someone has anxiety and someone doesn't have any anxiety or zero anxiety. That kind of situation is there. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई चीज है या नहीं है. The only thing is कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो इंटेंसिटी है किसी भी चीज का, वो केवल वेरी करता है, बिकॉज वी आर स्टडिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, राइट? वी आर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स with cognitive abilities, it means your thought process. तो एक एग्जांपल इसका हम ये लेते हैं, जैसे अगर किसी को एंजाइटी है, if someone has anxiety, so what is the difference between normal people and that person? Do we have anxiety? Yes. Or we don't have? We have. Right. So everyone has anxiety. Everyone has mood. Either it is depression or elated mood, whatever it is. So the problem here is, it is not like other sciences. Suppose in medical sciences, you Irrational belief. you have COVID. Sorry. Just about, like we are talking about COVID. So either you have or you don't have, right? Or you have, like any disease you take, you have it or you don't have. But in psychology, it is not like that. In psychology, the things are different. What is different? Suppose अगर हम बात करें एंजाइटी का, तो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी Fear. आप सभी को होती है. And there are persons who have anxiety disorders, but it doesn't mean we don't have anxiety. Anxiety disorder वालों को भी anxiety है, and we also have anxiety. What differs is Irrational the intensity. belief. Suppose this is the normal limit, है ना? Suppose this is the limit, so your anxiety somehow remains in that, in these under these levels, right? Suppose someone has anxiety disorder, so they have more anxiety. बहुत ज़्यादा इनको एंजाइटी होता है. So what is the difference? There is a difference of intensity and the frequency
Frequency means you also wash your hands when you go to toilet, or you do something where your hands are like dirty, so you wash your hands. But OCD patient also wash the hands. But OCD patient, they will wash 100 times or 200 times in a day, and you will wash only once or twice when it is required. So there is the similar behavior is there. The frequency is high. So this is the thing with psychology. It is not like other natural sciences or medical sciences in terms of research. If you say, so you cannot say कि भाई मुझे क्या कहते हैं एंजाइटी नहीं है, या मुझे सैडनेस नहीं होती है, या मैं डिप्रेस्ड कभी फील नहीं करता हूँ. सो एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, एंड वी कॉल इट, वी डोंट हैव ट्रू जीरो पॉइंट. वी डोंट हैव ट्रू जीरो पॉइंट. जीरो पॉइंट मतलब यू कैन नॉट से कि किसी का आईक्यू बिल्कुल जीरो है. यू कैन नॉट से किसी का डिप्रेशन बिल्कुल जीरो है. दैट यू कैन नॉट से. That is what, because everyone has that kind of characteristics. So because of these things, we face problems also. Because of these things, we face some challenges. What are the challenges that we will discuss here? So सबसे पहली चीज जो हमने कल भी बात की थी, that is subjectivity. So what is subjectivity? Already we have discussed, so not going into the detail. So many behavioral constructs such as attitude, emotions, personality traits are subjective in nature. Subjective in nature means what you feel in similar situation, what I feel in similar situation is different thing. So either it is attitude, emotions, personality traits. So everything is subjective in nature. So it becomes difficult to quantify. It becomes difficult to maintain objectivity, right? Because you are like, you may feel this in similar situation. You may feel in a different way. I may feel in a different way, as we have discussed yesterday. They cannot be directly observed, measured like physical properties. As I said, you can measure light, you can measure like sound and everything, but you cannot measure anxiety similarly. So this subjectivity introduced challenges to developing objective and reliable measurement instruments. So measuring instruments को develop करना proper, it becomes difficult. Suppose आपको height को measure करना, so you have inchy tape, right? And you can exactly measure it. But when it comes to anxiety, you cannot do the same thing with everybody. So it creates very challenging situation to create objective and reliable measurement. So that is one problem with measurement. Is it clear? Because कल भी हमने subjectivity के बारे में बात की थी. If it is clear, we'll move forward. बाकी लोग भी बात क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. It is not like... सर लेकिन मुझे एक और ये है कि एक तो अनप्रिडिक्टेड बिहेवियर हो गया वो, बट द थिंग इज दैट इट आल्सो अफेक्ट्स ऑन मूड, राइट? बिकॉज सबका मूड भी सब्जेक्टिव ही है. तो अगर इन्फ्लुएंस, अगर साइकोलॉजी का कौन सा भी टेस्टिंग करना रहेगा तो मूड आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. दैट्स व्हाई हम पूछते हैं कि आर यू कंफर्टेबल, आर यू ओके. अगर वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो डेफिनेटली उसका वो that is why we call it psychology is science as well as art. So that is your skills that you have to develop to meet. Like you have to develop a rapport when it comes to clinical setting. If the person is like angry or hungry or sad, you cannot administer the test or something. So that if like there are like class of psychological assessment and other, so in that you will learn those things in a better manner. Here we are talking mostly we are talking about like the process of developing the test, doing the research, that kind of thing. Yes, mood affects. So that is your work as a clinical psychologist to develop a proper rapport. You will not conduct the test immediately when they come. It is not like taking someone's blood and like
performing some test on that, right? Just like other tests we do in medical sciences. So it is like, if your client is not supportive, if your client is not in a good mood, you will not do that. Okay. Well, that is prerequisite of that. Okay. Anil ji, you were saying something? जी सर. हाँ, आपने माइक ऑन किया था, कुछ पूछ रहे थे उस टाइम पे, फिर नूर ने पूछना शुरू किया, बताएं. मैं सर समझ में आ गया था मुझे. अच्छा, ठीक है. सॉरी, मैंने फिर से बंद कर दिया. ओके सर. ठीक है. सो सब्जेक्टिविटी क्लियर हो गया? किसी का और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर. Lack of operational definitions. What is operational definition? Because when you will go for the research, you have to write the operational definition. What is operational? Sir, Anyone? Operational definition, basically you just create a definition by yourself according to you. जैसे हर definition होती है ना, जैसे pride के according या किसी और के according होती है, but you have to be create the definition that particular variable from your side. No, madam, ये नहीं होता है. Anyone else? कोई और ट्राई करेगा? नहीं. अनिल जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर. अमित जी, आपने भी माइक ऑन किया था. ओके, ठीक है. सो ऑपरेशन हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या मेजर करना है, ये है क्या? बिल्कुल ठीक है, मैं बताता हूँ. सो ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? ऑपरेशन का मतलब समथिंग इन ऑपरेशन, जिसको कर सकते हैं. ठीक है, कि जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी कि इंटेलिजेंस क्या होता है. तो सपोज किसी ने बोला, एक डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मुझे नहीं याद है, लेकिन डेफिनेशन ये है कि हाउ यू एडजस्ट विद योर एनवायरनमेंट, राइट? दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. और पर्सनालिटी की बात करें तो परमानेंटली जो एक आपके जो ट्रेट्स हैं, हाउ यू इंटरेक्ट, हाउ यू थिंक, हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स, हाउ यू फील, दैट इज योर पर्सनालिटी, राइट? सो टेक द एग्जांपल ऑफ पर्सनालिटी. सो सपोज पर्सनालिटी का एक डेफिनेशन है जिसको हम बोल रहे हैं कि कैसे पर्सन सोचता है, मतलब कॉग्निशन और थॉट, हाउ दे फील means emotions, right? And third one is you can say third one is how you behave or response, right? ठीक. So this is the definition of the personality. But the problem is operationalize करने का मतलब ये है how you will measure it, right? तो behavior construct often lack clarity, universally accepted operational definition. Different researchers may define the measure of the same construct differently, leading to inconsistencies and difficulties in comparing or combining research findings. So, how you will measure it, that is your operation. Like how you will put that definition in action, that is operational definition, you can say. So think about different intelligence tests. There are different intelligence theory. Yes. कोई एक दो का नाम ले सकते हो आप लोग? Anyone? बीने कामत, मिसेक, विस्क. नहीं, I'm not talking about the, ठीक है, टेस्ट की बात कर रहे हो आप. I'm talking about theories. So but anyways, you said विनय कामत and मिसिक, विस्क, और कोई टेस्ट होता है? हाँ, विस्क हो गया, वेज हो गया, एसपीएम हो गया, आरपीएम, राइट. अब क्या आप देखते हैं, क्या सारे टेस्ट एक जैसे हैं? मिसिक में अलग चीज होती है. हाँ, मिसिक अगर हम बात करें तो मिसिक हो गया, वेपिस हो गया, या विस्क हो गया, या वेज हो गया, है ना? तो ये सारे टेस्ट क्या हैं? They are based on similar theories. That is why they have non-verbal,
and verbal test. Verbal test again divided in different subtests. Non-verbal is divided in certain different other tests, right? So they are based on one theory. And now you take that SPM. Binay Have you seen that? Even Binay Kamath also. SPM, RPM. Have you seen that? There are some, अगर नहीं देखा है तो थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ो. SPM is like वहाँ पे बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं, उसमें आपको मैच कराना है कौन सा मिलता जुलता है, कौन सा फिट होगा उस पर्टिकुलर डिजाइन में, राइट? Yes, So Raven's first. and they are assessing the same thing, intelligence. The reason is they are entirely different tests. The reason is because they are based on different theories, different intelligence theories. How they define? प्याजे भी डिफाइन करता है इंटेलिजेंस को, एंड आपका स्टर्नबर्ग की करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं. सो हाउ यू डिफाइन योर तो ऑपरेशनलाइज कैसे करना है, दैट इज ऑपरेशनल, बिकॉज बेस्ड ऑन योर थ्योरी, योर कॉन्सेप्ट, you cannot assess only that, so you have to operationalize it so that you can understand what are the components under certain variable and how you will assess it. ठीक है, क्लियर है? Yes. अगर नहीं है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. Now next thing is reliability. We have discussed yesterday, so we are not going into the detail of that. Reliability refers to the consistency and stability of the measurement. Behavioral measure can be influenced by range of factors such as respondent variability. जो आप mood और ये सारी चीजें बोल रहे थे, वो है रिस्पोंडेंट की जो क्वालिटी है, इनको हम रिस्पोंडेंट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं. एंड सिचुएशनल फैक्टर्स, इन विच सिचुएशन यू आर डूइंग द टेस्ट, एंड द मेजरमेंट एरर्स, लाइक जो स्टैंडर्ड एरर्स होती हैं वो हम उसकी वजह से हो सकता है. इंश्योरिंग हाई रिलायबिलिटी requires careful instrument design and administration to minimize the measurement error. So there are measurement errors, so you have to be very careful. That is why when you use any test in your research or in a clinical setting, there is a manual and there are properly guided मतलब stepwise guidance how you will conduct the test. कौन सा आइटम पहले पूछना है, कौन सा फिर पूछना है, फिर उसके बाद क्या पूछना है, पहले कौन सा टेस्ट करना है, देन नेक्स्ट कौन सा टेस्ट करना है, हाउ यू विल स्कोर इट. ऑल दोस थिंग्स आर वेल डिफाइंड टू मिनिमाइज द एरर. दैट इज व्हाई यू शुड एग्जैक्टली फॉलो द टेस्ट मैनुअल इंस्ट्रक्शंस. जो भी एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअल होता है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, दैट यू हैव टू फॉलो. इफ यू विल नॉट फॉलो इट तो क्या होगा, आपके रिजल्ट गड़बड़ हो सकते हैं. तो टेस्ट डेवलप करना. सो अब ये चीज मेडिकल टेस्ट में नहीं होता. आपका मूड कैसा है, क्या नहीं है, इट डजंट मैटर. आपका ब्लड ग्रुप अगर मुझे चेक करना है, राइट, अगर आपका ब्लड ग्रुप मुझे चेक करना पड़ेगा तो क्या करूंगा मैं, आपका ब्लड ले लिया, आपका मूड कैसा है, क्या है, डजंट मैटर. बट इन आवर टेस्ट इन साइकोलॉजी it plays a important role. We call it like respondent variable. So वो सारी चीजें जो आपका नोट क्वेश्चन था वो ये है. सो आपको वो मेंटेन करने के लिए यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स गिवन इन एनी टेस्ट और मैनुअल. और दैट इज व्हाई व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च you create a steps, what you will do, how you will do, and when you will do. So all those things must be followed to do a good research work, even clinical assessment. Then validity, again validity also we have discussed yesterday, so I'm just telling you in brief. Validity refers to the degree to which measurement instrument accurately capture the construct intends to measure. Establishing validity requires demonstrating the instrument measure it claims to measure and is not influenced by extraneous factors. Validity issues can arise due to poor instrument design, response biases, inadequate sampling of the construct. So construct means what you want to measure, right? So validity क्या होता है, as I told you in last class also, validity is if the test is measuring
the same thing what it intends to measure. Like if you are using if you are, suppose you are like assessing intelligence, so your test must assess the intelligence also. So there is a statistical method to like find out the validity of the test. So that is what validity is. So we have discussed yesterday also. So I think I'm not going into like more details. If it will come in your syllabus further, so we'll discuss there in detail how to measure it. Now the social desirability biases. So social desirability क्या होता है? What is social desirability? Anyone? What is social desirability? Social desirability. Social desirability. Let me explain. No issues. So social desirability is, suppose अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, है ना, एंड यू हैव सीन कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या आप हेल्प करने के लिए रुकेंगे? सारे लोग जवाब दो। यस 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 सर। ठीक है। यस सर। तो अब जैसे सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ रुकेंगे, ठीक है। अब ये हो सकता है क्योंकि हम एक ग्रुप में बैठे हैं, आई एम नॉट सेइंग टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, सपोज हम एक ग्रुप में बैठे हैं, क्लास हो रही है, और हो सकता है रियल कंडीशन में जब ऐसी सिचुएशन आए और हमें ये डर लगे कि भाई कहीं मैं ना फंस जाऊं इसके चक्कर में, या कोई दो लोगों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है और मुझे उनको छुड़ाना है। आइडियली मुझे छुड़ाना चाहिए कि ठीक है किसी को हार्म ना पहुंचे, और एक पर्सन को दो लोग मार रहे हैं और ऐसा मार रहे हैं कि वो शायद मर जाएगा, तो मैं जाके उसको बचाऊंगा तो वो बच जाएगा शायद। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है 50% लोग ना जाएं और बचाएं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है दे विल से द सेम थिंग कि यस आई विल गो देयर, आई विल ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन। सो ऐसा क्यों? बिकॉज दैट इज व्हाट सोशल डिजायरेबल। Social desirability. Stereotype. It is not a stereotype, it's a different thing. Social desirability means like you are responding to anything based on people around you, कि what is the right response. Suppose अगर किसी से पूछा जाता है, किसी बच्चे से आप पूछते हो कि आपको 500 का नोट मिले तो क्या करोगे आप, और वहां पे और लोग भी बैठे हैं, आपको दिख गया तो क्या करोगे? तो हो सकता है वो कहे कि मैं 500 का नोट दूंगा और पूछूंगा लोगों से किसका है, ठीक है। लेकिन हो सकता है एक्चुअल में अगर कोई नहीं देख रहा है उठा के वो जेब में रख लेगा। तो रिस्पॉन्स वो कुछ और दे रहा है क्योंकि वो सोशली डिजायरेबल है, एक्सेप्टेड है, मॉरल है, कि वो जानती कि क्या हमें बोलना है, है ना। दैट इज आपका सोशल डिजायरेबिलिटी का रिस्पॉन्स हम उनको बोलते हैं, सोशल डिजायरेबल रिस्पॉन्स। सो दैट हैपेंस इन साइकोलॉजी आल्सो, right? So that also happens in psychological test, कि आप वो चीज बताते हैं जो ठीक होता है, जो आपको लगता है कि जो चीज ठीक है, नॉट कि जो हम करेंगे। तो दैट इज सोशल डिजायरेबिलिटी। अब आपसे कोई जैसे आपको कैसे बिहेव, आप किसी को नहीं पसंद करते हैं, आपके ऑफिस में वो पर्सन काम करता है सपोज, है ना, तो आप ऑफिस के अंदर तो उसके साथ एक जो सोशली बिहेव करने का तरीका है वैसे ही करेंगे, अंदर भले गुस्सा हो, जब मौका मिलेगा तो हो सकता है आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, राइट। सो सोशल डिजायरेबिलिटी बायस होता है। अगर किसी से आप पूछते हैं, सपोज अभी आपने एटीट्यूड बोला, सो इन एटीट्यूड सपोज यू हैव ए सर्टेन एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, कि आपको एक पर्टिकुलर पार्टी है जो आपको नहीं पसंद करती, लेट्स से बीजेपी है या कांग्रेस है, तो देयर आर पीपल हु लाइक यू कैन से दिस बीजेपी और कांग्रेस, राइट। सो बट व्हेन दे आर इन ए सोशल फोरम,
So they may not say that thing. They will see what other people are thinking. If they are in a group where other people also likes BJP or Congress, they will talk about that thing. If they see there are other people who don't like this party, so they will not talk about it. So that is social desirability, because your response is affected by your surroundings, your social situations. So respondent in behavioral research may be prone to social desirability biases, where they provide responses that are socially acceptable, confirm the social norms rather than the reflecting their true thoughts and behavior. तो अपने उनके अंदर क्या है, true thoughts and true behavior वो नहीं show करते हैं. So that is social desirability, and that can affect your results. Clear? Yes. Then cultural biases, another problem in measurement of psychological type. Cultural biases, as you know, the culture and the biases, you know, when you become biases, just like social biases. So many measurement instruments used in behavioral science are developed in a specific culture. Context may not be equally applicable across diverse population. Cultural differences in language, values, norms can introduce bias that limit the generalizability of the measurement and instruments. As we have discussed yesterday, suppose there are people from Rajasthan, there are people from Maharashtra, there are people from UP, there are people from Delhi, right? So हमने बात किया था क्या IQ assessment का. So the IQ assessment that is developed for the Delhi students may not properly work in UP or Rajasthan or in you can say Maharashtra, because culture is different, exposure is different. Similarly, I talked about like population, like if some test is developed in English for and norms, I have already told you what is the norms. So the norms are developed on English speaking population that cannot be generalized to Hindi speaking population. So this is the biases. So when there are cultural differences, and then these things happens. And in India, that is the biggest problem, because each of our state has like different culture, different geographical situations. So that is why आप देखेंगे कि आपको हिंदी में, गुजराती में, मराठी में टेस्ट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है. The reason is अच्छे टेस्ट की तो बिल्कुल भी बहुत ही कम है. The reason is क्योंकि developing a test or doing extensive research is a very, very expensive process, and it needs continuous upgradation also. So that is why because जो norms आज valid है वो आज से 5 साल के बाद 10 साल के बाद नहीं होंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि बिहेवियर में चेंजेस आते हैं. तो जैसे आप अभी हैं, हो सकता है आपके बच्चे जो होंगे उनका IQ और वो सारी चीजें आपसे अपने टाइम, क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा है, तो आपके अपने उस वक्त से उनके आज की डेट में डिफरेंसेस आएंगे. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू अपडेट द टेस्ट आल्सो. देन लिमिटेड स्कोप. नेक्स्ट थिंग, तो बिहेवियर कंस्ट्रक्ट की अगर हम बात करें तो बिहेवियर कंस्ट्रक्ट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसिटेड, मेकिंग इट challenging to capture their full range with a single measurement instrument. Researchers may need to rely on multiple measurement, rely on proxy indicators, and which can introduce measurement error and reduce the precision of the assessment. So क्या होता है कि एक ही टेस्ट से आप सारा कुछ असेस कर लेंगे, नहीं हो सकता, मुश्किल काम होता है. एक एग्जाम्पल, बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम क्लिनिकल साइकोलॉजी बैकग्राउंड, सो आई टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द क्लिनिकल साइकोलॉजी. सपोज यू हैव ए पर्सन जिसको डिप्रेशन है, और अब आपको उसका असेसमेंट करना है. क्या करना है कि आपको क्लियर हो गया कि उसको डिप्रेशन है. कोई कुछ पूछ रहा था, क्वेश्चन है किसी का? नो. सो डिप्रेशन है. सो अब उस डिप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, उस डिप्रेशन की वजह से पर्सन को अपने डिफरेंट एरियाज में प्रॉब्लम हो रही है. कहाँ? उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है, उसके जॉब में प्रॉब्लम हो सकता है ना, उसके
सोशल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकता है. सो अब नाउ वी वांट टू नो दैट हाउ दिस पर्सन सी द वर्ल्ड, क्योंकि सबकी एक पर्सनालिटी भी है, तो वी हैव टू असेस द पर्सनालिटी. There are people who are optimistic, there are people who are very aggressive, there are people who are more submissive. So different kind of people are, so we have to assess the personality. So we will do the personality assessment. अब personality assessment आपको जो है दो तरीके के हो जाएंगे. दो क्या हो जाएंगे, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में आपका TAT एंड रुसाक आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका MMPI आ गया, है ना, या 16 PF आ गया, ये करते हैं. तो अब इन दोनों की अपनी लिमिटेशंस. तो बहुत सारी चीजें आपको एक साथ नहीं मिलती. और रिलेशनशिप चेक करना है, उसके रिलेशनशिप को वो कैसे देखता है, हाउ दे द पर्सन फील्स, हाउ दैट पर्सन लाइक बिहेव इन ए रियल सिचुएशन एंड हाउ दे विल इंटरेक्ट विद अदर्स. वो अगर चेक करना है रिलेशनशिप्स के लिए, तो बेस्ट टेस्ट इज TAT है. सो अब डिफरेंट एरियाज आपको कवर करने हैं, सो यू विल टेक द डिफरेंट टेस्ट. We call it battery of tests. So usually when we deal with clients, or even in research also, when we deal with them, we take battery of test. We don't take single test. So battery of test is where there are number of tests are there. Like there are some personality tests, there are some like projective tests, there may be some objective tests. So we use battery of tests. In intelligence tests like WAPIS, MISIC, है ना, या वेज, वहां पे जरूरत नहीं पड़ता है बैटरी ऑफ टेस्ट, बिकॉज they already contain number of sub tests. So we don't take like other, because that is a battery. We call it battery actually, है ना. So that is what happens. So they measure, the test measures a limited thing in a person, limited variable, one or two variables in person. So sometimes we have to use battery of test to avoid this kind of problem. So that these were the problems in measurement when we are doing some psychological research or assessment. Clear hai? Any question related to this? No sir. नो सर. ठीक है. सो ये था. अब हम आएंगे दूसरा जो हमारा टॉपिक है. अगला टॉपिक है लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल. कभी पढ़ा है ये? Yes sir. आप कुछ पता है क्या होता है? कोई बताएगा? How do we select the variables? Oh, that means क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं, बताओ. सर ये मेजरमेंट ऑफ स्केल है नॉमिनल, फॉर एग्जांपल नाम से होता है, जैसे रिलीजन वाइज हो गया, हिंदू मुस्लिम या मेल या फीमेल. ऑर्डिनल सेम ऑर्डर और सीक्वेंस में होते हैं, बट शायद जो स्टार्टिंग होता है वो 0 एब्सेंट या ऐसा कुछ है. और क्या है? और कोई? रेशियो, ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो एंड मोर आल्सो. हाँ ठीक है. 4 चलो मैं बताता हूँ. ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आगे आपको काम आने वाले हैं आपके रिसर्च में भी. अगर आप रिसर्च में जाते हैं तो डेफिनेटली. एंड these are the bases that will decide, on that basis only you will decide which statistical tool you will use, like parametric, non-parametric, right? So कौन सा आप यूज करेंगे जब आप रिसर्च करोगे अपना, चाहे वो PhD का रिसर्च हो, चाहे वो आपका MPhil का रिसर्च है. जब आप उसको करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा टूल आपको यूज करना है, which tool you want to use. Statistical tool now I'm talking about this psychological assessment. Tools means like correlation करना है तो कौन सा correlation करना है, product movement करना है, rank order करना है, or which like statistic I will use. That is entirely dependent on the types of data you have.
and the sample you have taken. So इसलिए जो भी आप वेरिएबल्स लेंगे उसको देखना हमें पड़ेगा कि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो नॉमिनल में आ रहा है, ऑर्डिनल में आ रहा है, या इंटरवल में आ रहा है, या रेशियो स्केल में आ रहा है. ठीक है. So that we have to understand, and these are the very basic concepts, and most of the time people don't know these things, or they are not clear about these things. That is why they feel lot of problem when they have lot of problem when they conduct some research or doing something like in the field of research, right? So in the field of psychology, variables are often classified into आप कह सकते हैं classified into different level of measurements based on the nature of characteristic of data. So nature and characteristics of data is very important. On that basis only we decide which kind of like data we are getting. The four commonly recognized level of measurement are nominal, ordinal, interval, and ratio. So they are very simple thing. Simple like concepts, but if it is they are not clear, you are not clear with that, then it will create a lot of problem further in your research and your PhD and dissertations. Okay. So now we are coming to first one, that is nominal scale. So what is nominal scale? Represents the lowest level of measurement. Variable measured at the nominal level are categorical or qualitative in nature and do not have any inherent order or numerical value. They are simply assigned labels or categories. Example of the nominal variable in psychology including gender, male, female, marital status, favorite color, red, blue, green. Nominal data can only be classified into categories summarized using frequencies and proportions. अब आपने रिसर्च किया, ठीक है. अब जब आपने कोई रिसर्च आप कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा कि होगा ये कि सपोज आपको ये देखना है कि मेल और फीमेल इन दोनों में के डिप्रेशन में क्या कुछ फर्क है. तो आपने किया डिप्रेशन के का एक स्केल कर लिया, उस पे आपका स्कोर आ गया सपोज कुछ 20, किसी का 30, किसी का 21, किसी का 25, समथिंग लाइक दैट. सो ये तो आपका डेटा आ गया क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव. लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्वांटिफाई कर सकते हो आप? नहीं कर सकते. तो ये जो डेटा हमें मिल रहा है दैट इज कैटेगोरिकल, कि हम ये देखना चाहते हैं कि मेल फीमेल में डिप्रेशन में क्या कुछ डिफरेंस है. तो एक वेरिएबल हमारा डिप्रेशन हो गया, एक वेरिएबल हमारा क्या हो गया, मेल एंड फीमेल जेंडर हो गया. दिस इज जेंडर. तो यू कैन नॉट डिवाइड इट कि मेल फीमेल या आधा फीमेल, दैट काइंड ऑफ मैक्सिमम यू कैन डू मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, दैट यू कैन डू. जो तो these are the things we call it categorical, कि कैटेगरीज में डिवाइड होगा. दिस इज ए क्वालिटेटिव थिंग. तो all that type of data is nominal data, you can say. We call it nominal data or nominal scale. रिसर्च में जरूरत पड़ती है कि भाई आप बहुत सारे रिसर्च पढ़ते होंगे जहां पे आप देखते होंगे जेंडर वाइज क्या डिफरेंसेस हैं. एंड अगेन आप ये भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, रीमैरिड. तो अब ये क्या है, ये भी कैटेगरीज हैं. सपोज यू वांट टू सी द डिप्रेशन लेवल और स्ट्रेस लेवल इन सिंगल पीपल. सिंगल हैं जो, उनमें मैरिड हैं, उनमें डाइवोर्स हैं, उनमें राइट. ये तो आप जब ये देख रहे हैं, सो वन ऑफ द वेरिएबल इज नॉमिनल स्केल पे है आपका, वो नॉमिनल डेटा है ना. सो दीज काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज नॉमिनल डेटा. और इनमें जैसे आप आगे देखेंगे
जो हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, लाइक जहाँ पे हम कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं, 2x2 टेबल्स बनाते हैं, वो हम बात करेंगे बाद में, काई स्क्वायर निकालते हैं 2x2 टेबल। सो वो टेस्ट किस लिए यूज होता है? क्योंकि हमारा डेटा क्या है? हमारा डेटा नॉमिनल डेटा है। सो वी कैन नॉट यूज, यू कैन नॉट टेक द मीन आउट ऑफ दिस। मीन नहीं निकाल सकते आपका, मेल फीमेल का मीन क्या निकालोगे? मेरिट सिंगल क्या निकालोगे? एसडी क्या निकालोगे? नहीं निकलेगा ना। सो वी यूज कैटेगरी, हम वो टेस्ट यूज करते हैं जो इस तरह के डेटा को हैंडल कर सके। काई स्क्वायर जैसे हमने देखा था कि उसमें 2x2 का टेबल बनता है, तो मेल फीमेल उस तरह से करते हैं। और भी एक आध टेस्ट है, वो बात जब हम बात करेंगे, सो देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सेकंड थिंग इज ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ मेजरमेंट। बिल्कुल क्लियर रहना है इन कॉन्सेप्ट्स में, अगर नहीं होंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा आपको, ठीक है। सो ordinal scale represent a higher level of measurement than the nominal scale, so it is better than categorical जो हम डेटा था हमारे पास। variable measured at the ordinal level possess categories that can be ordered or ranked। order, ordinal कहाँ से आया? order से। order क्या है? मतलब rank, ठीक है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा रैंक वाले जो डेटा होते हैं उनमें हम रैंक ऑर्डर टेस्ट लगाते हैं कई तरह। अगर आपको याद होगा, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ ना, उसकी डिटेल में जा रहा हूँ, बहुत सारे टेस्ट हैं जो रैंक वाले डेटा पे काम करते हैं। तो बट द डिफरेंसेस बिटवीन द कैटेगरीज आर नॉट नेसेसरली इक्वल और मेजरेबल। In other words, the ordinal scale retain the information about the relative order, but not the magnitude of the difference between the categories. Example of ordinal variables in psychology include Likert scales, है ना, and the educational level, like elementary school, high school, bachelor degree, master degree. In addition to the frequency distributions, ordinal data can be analyzed using non-parametric statistics. अभी दोनों ही, चाहे वो वाला है चाहे ये वाला, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे यूज होती है हमारी। हम बात करेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को पता है, बट अगेन आई विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर क्लास। सो ऑर्डिनल डेटा क्या है? ऑर्डिनल डेटा इज, आपने टेस्ट देखे हैं जैसे बहुत सारे कि स्ट्रांगली एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, न्यूट्रल हैं, एग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, है ना। देखे हैं बहुत सारे एटीट्यूड टेस्ट, राइट। सो दीज काइंड ऑफ टेस्ट आर, जैसे आपने 16 देखो नियो पीआई आपने देखा होगा, पर्सनालिटी इन्वेंटरी नियो 5 जो आती है, उसमें भी इसी तरीके से दिए हुए हैं। तो अब ये क्या है? इसको हम लिकर्ट स्केल बोलते हैं। सो द थिंग इज, हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि एग्री, है ना, स्लाइटली एग्री, इस तरह से लिखा हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। तो अब ये क्या करता है? एक ऑर्डर में लगा दिया है इसने। आपके पास जो डेटा है ऑर्डर में आ गया। कुछ लोग स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, स्ट्रांगली नहीं करते हैं, बट देयर आर पीपल हु आर न्यूट्रल, देयर आर पीपल दे एग्री, देयर आर पीपल हु स्ट्रांगली agree with the certain thing or certain concept, right? So अब strongly agree और disagree मतलब एक ऑर्डर में चल रहा है। कुछ लोग हैं जो एग्री करते हैं पहले, दूसरे हैं जो कम एग्री करते हैं, तीसरे हैं जो ना तो एग्री करते हैं ना ही डिसएग्री करते हैं, चौथे हैं जो डिसएग्री करते हैं, पांचवे वो हैं जो स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, राइट। सो दीज आर द ऑर्डर, this is the order you can say, right? But जो इसके अंदर क्या है कि इनके बीच में इनका मेजरमेंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इनकी जो strongly disagree है and the disagree one is के बीच में कितना डिफरेंस है, that you cannot quantify. Similarly स्कूल लेवल की अगर हम बात करें, एजुकेशन लेवल की, तो आप ये नहीं कह सकते एलिमेंट्री, हाई स्कूल, बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री। आप ये नहीं सकते कि बैचलर डिग्री वाला जो है मास्टर डिग्री वाले से आईक्यू में कम होगा और इतना कम होगा या उतना कम होगा, दैट यू कैन नॉट से,
There is no clear-cut division in that. There is a broader categories, and that is in order. So that is why we call it order, ordinal scale. That is why we call it ordinal scale, right? In other words, the ordinal scale retain the information about the relative order. कि ठीक है, एग्री वाला डिसएग्री वाले में डिफरेंसेस है, कितना डिफरेंस है दैट वी डोंट नो. अदर थिंग इज, एक पर्सन क्लास में फर्स्ट आता है, एक पर्सन दैट कम्स सेकंड, राइट? बट यू डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम until unless you will not get the marks. Here you will not get the marks actually also, but वहां पे भी क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आपको बोला जाता है क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन लोग आए हैं, so or they have scored accordingly, but you don't know, maybe the person who has scored who has achieved first position, they have scored 80 marks, and the second one has scored a 60 marks, and third one has scored a 30 marks, right? So you cannot know, you don't know what is the difference between them, how much difference is between them, right? So that is what order hai. There is a order, but you don't know the exact difference between both the order, right? So that is ordinal scale. Orders में हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल्स are that is again more complex, more clear than आपका जो nominal and ordinal था. तो interval scale represents the higher level of measurement than the ordinal scale. Variables measured at the interval level possesses ordered categories with equal intervals between them. In this case, the differences between value are meaningful and can be quantified. However, the absence of the true 0 point characterize interval data. Common example of variable measured in the interval in psychology include temperature measured in Celsius and Fahrenheit, or Likert scales with numerical values like 1 to 10. Interval data can be used for the wider range of statistical analysis, including measure of central tendency, dispersion, and parametric statistical test. तो अब इंटरवल का मतलब समझते हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल है, लेकिन इसमें 0 पॉइंट इसमें भी नहीं होता है. 0 पॉइंट तो साइकोलॉजी के जितने भी वेरिएबल्स हैं वहां पे नहीं होते हैं, ठीक है. सो अब इंटरवल स्केल को हम कैसे समझेंगे? क्या होता है कि अगर हम देखें कि अब आपने अगर कभी बीडीआई किया है या आईक्यू असेसमेंट किया है, सो व्हाट यू डू इज लाइक यू से अगर 20 से नीचे है, बिलो 20 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीवियर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. अगर 20 to 35 के बीच में है तो हम बोलेंगे मॉडरेट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम बोलते हैं. 35 to 50 है तो क्या कहते हैं, मॉडरेट. तो ये इंटरवल है. इस इंटरवल के अंदर जो आ रहा है उसको हमने एक कैटेगरी में डाला हुआ है. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी का आईक्यू बिल्कुल 0 है. इवन इन सीवियर केसेस यू कैन नॉट से द आईक्यू इज 0. सो देयर इज आईक्यू 0 नहीं हो सकता, एंजाइटी 0 नहीं हो सकती. सिमिलरली इन डिप्रेशन आल्सो, लाइक यू यूज बीडीआई, सो यू से लाइक 30 प्लस है तो सीवियर डिप्रेशन है या माइल्ड डिप्रेशन है या मॉडरेट डिप्रेशन है, डिपेंडिंग ऑन द स्कोर. So these are the things they are called as intervals. अब अगर आपने स्टैट पढ़ी है, स्टैट में किया है, तो हम इंटरवल्स बना लेते हैं कि सपोज हमें रिसर्च करना है आईक्यू पे, सो हमने क्या बना लिया? हमने डिफरेंट इंटरवल्स बना लिए. ऐसे लोग जिनका 0 to 20 के बीच में आईक्यू है, ऐसे लोग जिनका 0 या स्कोर आईक्यू व्हाटएवर यू वांट टू से, और डिप्रेशन पे बीडीआई पे स्कोर और व्हाटएवर. तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60, एंड देन ये इंटरवल है. और हमने इसमें निकाल लिया कि इसके अंदर 10 लोग हैं, इसमें देयर आर 20 पीपल, देयर आर 30 पीपल, देयर आर 40 पीपल. सो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं.
जीरो यहाँ पे भी नहीं सारा है, हम ये लिखा हुआ है, लेकिन जीरो क्या कहते हैं, ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता है यहाँ पे भी। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज आ गई हमारे पास, अगर आपको देख रही है, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, नॉट doing the statistics part. So now you have frequencies. Now you can calculate the mean, median, mode, and SD, etc. So you can perform qualitative analysis on these kind of scores. So they are interval scores. Is it clear? क्योंकि I am expecting कि आपने एमए किया हुआ है, तो बेसिक कुछ चीजें जैसे मैं मीन, मीडियन, मोड और ये सारी चीजें बता रहा हूँ, तो you have already studied it, like so that we are I am expecting from you. So that is interval scale. Now the last one is ratio scale. Ratio scale क्या होता है? Ratio scale represents the highest level of measurement. Variable measured at the ratio scale possess all the properties interval scale, but also have a true 0 point. इसमें 0 point भी होता है, indicating an absence of the measured attribute. साइकोलॉजी में नहीं होता, बहुत कम, शायद मतलब नहीं होता. The 0 point allows for the meaningful ratio and calculations such as proportions and percentages. Example of variables measured in the ratio level in psychology include age, response time, weight, number of correct responses on the test. Ratio data can be analyzed using full range of statistical technique, parametric test, advanced statistical modeling. तो अब साइकोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें तो 0 पॉइंट होता नहीं है, लेकिन जो फिजिकल एट्रीब्यूट हैं जो टेस्ट पे कर रहे हैं वहां पे हो सकता है. अब वेट, हाइट, है ना, ये जो सारी चीजें हैं इनमें 0 पॉइंट होता है. भाई किसी की हाइट 0 भी हो सकती है, भाई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप कह सकते हो, है ना. सिमिलरली आपका क्या कहते हैं, मतलब इनको 0 पॉइंट तक कैलकुलेट किया जा सकता है कि भाई 0 भी कोई हाइट होती है. एंजाइटी कोई 0 होती है, नहीं होती है, बट इंची टेप लेके हम ये बता सकते हैं कि भाई 0 हाइट का मतलब है कोई हाइट कुछ है ही नहीं यहाँ पे. सिमिलरली वेट मतलब 0 है नहीं है, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो इनमें 0 पॉइंट्स होता है. 0 पॉइंट्स कैसे होता है कि वेट किसी का, अब मेल फीमेल अगर हमें बोलना है तो उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि मेल 1.5 है, फीमेल 1.25 है, ऐसा तो हो नहीं सकता. मेल या मतलब 1 होगा या मतलब मेल होगा, दैट्स इट, या फीमेल. तो इसको हम पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, बट हाइट को हम कर सकते हैं कि किसी की हाइट हो सकती है आपका 165 सेंटीमीटर या 165.07 सेंटीमीटर. हम जितना डिटेल तक जाना चाहें जा सकते हैं. सिमिलरली वेट अगर हम केजीज में कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है. तो दे हैव ट्रू 0 पॉइंट. वी कैन परफॉर्म एनी स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑन दिस काइंड ऑफ डेटा. सो मेजरली व्हेन वी टॉक अबाउट psychology, so all the physical characteristic of the individual can comes under this. And other thing is like आपने, अगर आपको पता है एक टेस्ट होता है लेटर कैंसिलेशन टेस्ट, है ना, वहां पे भी 0 हो सकता है कि पर्सन ने एक भी करेक्ट कैंसिलेशन नहीं किया. डू यू नो व्हाट इज लेटर कैंसिलेशन टेस्ट? एनीवन? लेटर कैंसिलेशन किया है किसी ने? Letter cancellation is a test where suppose there are a lot of letters randomly written on a paper, and we ask the person to like cross a specific letter. Suppose A से Z तक के बहुत सारे अल्फाबेट लिखे हुए. सपोज ये स्क्रीन ही ले लेते हैं और इसमें मैं किसी को बोलता हूँ कि मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, सपोज मैं किसी को बोलता हूँ कि इसमें जितने भी आपके ए आए हैं उनको क्रॉस करना है. तो क्या हो गया, जैसे ये हो गया, ए को इस ए को क्रॉस किया, फिर ये ए आ गया, ये क्रॉस किया, देन इसी तरीके से हम आगे जितने भी ए आएंगे उनको क्रॉस करना है. तो दिस इज ए लेटर कैंसिलेशन टेस्ट. तो इसमें ये भी हो सकता है कि कितने नंबर्स उसने कितनी जगह पे क्या कहते हैं क्रॉस किया, कितने छोड़ दिए, कितनी गलतियां हुई या एक भी नहीं किए. सो इन दीज टाइप ऑफ स्कोर्स आर कॉल्ड रेशियो स्कोर्स बिकॉज इवन वी कैन काउंट देम, and there are 0 point is also there, and we can perform all kind of statistics on these kind of data. So that is what ratio scales are. So ये आपके 4 scales थे. आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. और ये
बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही बेसिक चीज है. इवन सीबीएसई की जो 11th-12th की बुक है उसमें भी दिया होता है. एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग बिकॉज इट help us to determine appropriate statistical analysis, as I told you earlier, interpreting data and drawing the meaningful conclusion in the psychological research. है ना. अगर हमें नहीं पता होगा सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. सो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होगा, वी विल नॉट बी एबल टू चूज राइट टेस्ट फॉर आवर रिसर्च. So this is a very basic thing. So we have completed this today, and